Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about the organic chemistry problems that appeared in TIFR exam in 2018, and we are also going to look at the concept called isoelectric point. The reason why I'm going to talk about this one is because one of the questions is usually came which was based on this amino acid separation. So that's the reason why I thought it would be a good idea to briefly talk about isoelectric point and how the amino acids can be separated using ion exchange chromatography. Okay, so let's start the video. So the first problem that we have here, what they've said that, okay, predict the feasible product or the products for the following bioconjugation reaction. Okay, so what they have given us is basically a melamide, and what we have here is a thiol, alkyl thiol. Here they have not mentioned R1, so we presume it's an alkyl thiol. And if we look at the pH of the reaction, it is 7.4. So this is slightly basic. This is not exactly basic. So this is slightly on the basic side. So what does it mean? It means nucleophilicity of basically this thiol is going to predominate, and it is going to behave like a nucleophile in this particular reaction. So we know that usually the thiols, they are pretty much known for their conjugate addition reactions. So in this particular, whenever this thiol adds on to this melamide, so it is going to add in a conjugate manner. So let us look at the possible compound. So here what we can see, this behaves like a nucleophile and adding on to this double bond in a conjugate manner. So this is what we call this in conjugate addition, because this is a soft nucleophile and this is a soft electrophile. So one of the products that we get is one. The second products or the other products that we can think of is, since I'm saying that what we are using is a slightly basic condition, so we can think about the basic hydrolysis. So if we hydrolyze this melamide, what do we end up getting is the formation of this amide and carboxylic acid. So here again, the thiol can clearly attack in a conjugate manner to give you compound number 3. Compound number 2, which has formed as a result of the hydrolysis. So what are the possible compounds that we get? Is basically 1, 2 and 3, and the reason why the compound 4 we do not see under this reaction is because what it is basically saying that there is a generation of a carbanion here, and which might be attacking this thiol. So such reverse addition cannot take place. So compound 4 does not form. So the correct answer in this case was option number 1. Okay, where 1, 2 and 3 are the products that are formed as a result of the bioconjugate reaction. So here the problem that is given to us is basically based on an NMR problem. It's an NMR and it's a very straightforward problem. Let us just try and approach it in the most logical manner. Okay, so whatever is given to us, they have given us a molecular formula, so we can clearly calculate the degree of unsaturation. So it will be 5. So what does it mean? It means we are dealing with an aromatic compound, and there is one more double bond which could be another ring, but since the options that are given to us has a carbonyl group, so it could be a carbonyl. So that accounts for 5 degree of unsaturations or 5 double bond equivalent. Now if we look at the data carefully, we can clearly see that there is a singlet of one proton at 5.8. So it clearly means that we are talking about OH. It could be phenolic, it could be alcoholic. So what this means that in option number 3 there is no phenolic or there is no OH there. Okay, and also this singlet is coming at 5.8, and we know aldehydic doesn't come at 5.8, it comes somewhere around 9 to 10. So we can neglect option number C. Now we are going to briefly look at the data, which is the IR data. We can see a signal at 1680, which clearly means the carbonyl that we are talking about is a normal carbonyl. It is not the esteric carbonyl, because the esteric carbonyl group comes somewhere around 1735 to 1750. And what is the reason for that? It is because of the electronegativity of the oxygen, it withdraws the electron density. So the lone pair of electrons that are on oxygen, they increase the double bond character of this carbonyl group, as a result of which they resonate at much higher frequency. And if we see in option number 1 and option number 2, both of them are esteric. So we can clearly sideline these two options. So we have sideline option number 1, B and C. So the correct answer is going to be option number D. So it's a pretty straightforward and simple problem if we interpret the data correctly.
So the next question was a straightforward question which is based on a name reaction called Arbizov reaction, and this reaction is used for the synthesis of phosphonate esters. So in this reaction, what do? We start from the phosphides and we treat it with any alkyl halide. So here the alkyl halide that we're talking about is a benzyl iodide. So the lone pair of electron on phosphine, they attack the CH2, iodo leaves. Now in the next step, what happens, this iodoanion, it attacks this particular carbon. So the double here, the electron moves. Okay, and what is the driving force for this reaction? Formation of a strong phosphorus oxygen bond. Actually, it is this drive to get a higher stability between phosphor and oxygen double bond, which drives this reaction into the forward direction. So the product that we get is a phosphonate ester plus isopropyl iodide. Okay, so the correct option in this case was option number B. Pretty straightforward, and this is the name reaction. It is called Arbuzov reaction. So we are in this particular problem, we are given 3 compounds and they have asked us that which one out of these is chiral. Okay, it's a pretty straightforward problem. Let us just try and look at these compounds. अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड नंबर 1 को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, here the stereochemistry is OH is not given. ठीक है, so it means it could be coming out here, the OH is could be coming out of the plane or it could be going behind the plane. अगर हम एक बिल्कुल straight plane पास करें तो we can clearly see this molecule has a plane of symmetry. If it has a plane of symmetry, then it is not chiral. Whereas if you see compound number 2, there is a chiral center at this position that is present. Why? Let us just see here, this particular tetrahydrofuran ring, this could become here, the oxygen could be coming out of the plane and here it could be going behind the plane. So if we pass a plane through this side, we can clearly see this oxygen would be in the plane and this would be coming out of the plane. So what does this mean? It means this particular molecule that we are talking about is chiral in nature. And what about option number 3? Here what we have is an admantane with OH. Now if we pass a plane like that, how should I tell you? If you just cut this into the half, we can clearly see there's a plane that is present. The reason why I have represented it like that, if you pass a plane like that, so here OH, we know that this is coming out of the plane. So if we pass a plane will be absolutely straight, then we know there is a plane of symmetry that is present in this molecule as well. So the correct option in this case was option number 2, which was chiral. So the next problem that was asked, it was based on basically electrocyclization and Diels-Alder reaction, combination of 2 problems. And here in the first step, what they have is this particular triene, and they are heating it. So it means this is nothing but a 6-pi electrocyclization. And we know when we are talking about 6-pi electron, this is going to be the HOMO, right? Because we are talking about heat. So it is going to be the HOMO that we are going to consider. So in order to have a perfect overlap, there would be a disrotation which will lead to both the methyl group on the same side, right? So this is the diene that you will end up getting, where both the methyl group are on the same side. And in the next step, what they are doing, they are basically treating with the melamide and maleic anhydride in AlCl3. So the role of the AlCl3 is to coordinate with the carbonyl group of this melamide in order to activate it to undergo Diels-Alder reaction. This is nothing but 4+2 Diels-Alder reaction. Now this is how it goes through. So here I have represented this 4+2 cyclization. So the 2 product that you get is, one is exo and one is endo. And we can clearly know in the case of the endo, which is going to be the obviously major product, because there is a secondary overlap between this carbonyl and this pi electron, as a result of which this is the more stable compound because of the secondary overlap. And this product is formed as a result of the endo addition. ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, this is going to be the endo addition, and we know both the methyl groups are coming out of the plane, or in other words we can say they are on the same side. In the product also we can see both the methyl groups are on the same side, right? So the correct option in this case was option number 1. So if we see, so this particular question was also asked in Assam and Meghalaya edition of this year's CSIR NET exam. So basically here what we are talking about, they are saying that this is a very well known native chemical ligation. So in the chemical ligation reaction, what you do, you take a C terminal
peptide thioester. So this is nothing but a C-terminal peptide thioester. And what do? We carry out its reaction with N-terminal cysteine peptide. So this is N-terminal cysteine peptide. So what happens when there is a reaction between these two? Here this sulfur, it attacks the carbonyl, so because this is an activated thioester, so what do we end up getting is this particular intermediate. And in this intermediate, what happens now the amine, it attacks this thioester again. So this is exactly what is happening. So what we have is this an intermediate, and it is this amine which attacks, and this is a thioester. So this is the intermediate that we get. Okay, here this is simply the amine is attacking the carbonyl, charge comes back, this particular carbon sulfur bond it opens. So what it will end up getting, गिविंग यू इज कंपाउंड नंबर बी. ठीक है, अगर हम इन रियलिटी के अंदर देखें तो क्या हो रहा है कि हो ये रहा है कि इस पर्टिकुलर एमीन और ये वाले कार्बन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड नेटिव पेप्टाइड बॉन्ड, बिकॉज दैट इज व्हाट आवर एम इज टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड दिस पर्टिकुलर एमीन. और एंड में भी देख सकते हैं हमारा यही बना. सो इट इज दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट वाया विच दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. और इसका रीज़न क्या है, मतलब ये रिएक्शन प्रेफर्ड क्यों की जाती है? इसका रीज़न ये है कि रिएक्शन दिस इज हाईली रीजियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो सेलेक्टिव. और इस केस के अंदर हम आ गया क्योंकि वट वी आर डीलिंग विद इज द पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड. सो नो रेसिमाइजेशन और इपीमराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर केस एंड देयर इज नो साइड रिएक्शन. सो दैट इज वाई दिस native chemical reaction strategies to synthesize peptide is very much adopted by a lot of organic chemists. So the next problem that we are going to talk about is based on the Wittig olefination. So what we have is the dibromoethane treated with triphenyl phosphine followed by sodium hydride. So in the first step, we know the phosphine, it replaces the bromo. This is what we form. Then we are adding the sodium hydride, which is a base. We know now this phosphor is positively charged. It means it is withdrawing the electronic density from the carbon next to it, as a result of which this hydrogen becomes acidic. Now the hydride of the sodium hydride, it abstracts this particular hydrogen. It it becomes negative here. So this negative charge comes, bromo leaves. So what do we generate is a formation of this vinyl triphenyl phosphonium bromide halide. So this is what we form here, right? This is the Wittig salt that we get. In the next step, what it says is basically it is treating with this salicylaldehyde and using sodium hydride. Now when you are adding sodium hydride to this vinyl phosphonium salt, what is happening? It is basically abstracting this proton to generate this alide intermediate. और इसके बाद हमारा क्या हो रहा है? सिंपल Wittig olefination हो रहा है. दिस नेगेटिव चार्ज इट अटैक्स दिस aldehydic carbon to form this alene intermediate. Lone pair of electron oxygen it attacks to give rise to the formation of this stable compound number P. So the correct answer was straightforward, option number D. And this question, if I remember correctly, has also been asked in either GATE और नेट, दोनों में से एक में प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है. ठीक है. So the next problem that was asked to us, what they have given us is basically leucine residue, and they have said that कहाँ पर यूजली ये प्रोटीन के अंदर पाया जाता है. ठीक है, क्या इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, या इंटीरियर एक्सटीरियर में दोनों में से इक्वली लाइकली है कि कहीं पर भी हो सकता है, या वो डिपेंड करेगा कि हम प्रोटीन इज़ वाटर सॉल्यूबल और इज़ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन. एक्चुअली इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कि वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के प्रोटीन से डील कर रहे हैं. ठीक है, अगर हमारा प्रोटीन हमारा क्या वाटर सॉल्यूबल है तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सटीरियर के अंदर पाया जाएगा. ठीक है, बाहर पाया जाएगा क्योंकि दीज आर द पोलर ग्रुप्स विच आर गोइंग टू इंटरैक्ट. इफ इट इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गो इनटू द इंटीरियर. उसका रीजन क्या है? बिकॉज व्हाट वी हैव इज दिस हाइड्रोफोबिक साइड्स विच आर गोइंग टू मेक इट इंसर्ट इनटू द प्रोटीन. ठीक है, सो डिपेंड करेगा व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन दैट वी आर डीलिंग विद. So the next problem that were asked to us is basically based on this is what we are carrying out is a macroelectronization. So this is kind of a preferred reaction in supramolecular chemistry. इतना आसान नहीं होता इन दोनों moieties को आपस में combine करना. So what they are asking us, what is the role of this reagent 1? पहले तो हम देखें this is nothing but a phosphonium phosphonium salt, right? That is what it is. और it has a long alkyl chain. यहाँ पर भी हमारी क्या है कि एक C16 alkyl chain है और 3 C4 alkyl chain है. ठीक है, the role of reagent 1 हमको clearly पता है, it is phase transfer catalyst.
मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं वाटर और टोल्यूइन के अंदर, और बोथ ऑफ देम आर इमिसिबल इन नेचर, ठीक है, दोनों के दोनों इमिसिबल है। तो अगर हमें यहाँ पर अगर क्या करना है, सो दिस इज नथिंग बट अ टोसिल ग्रुप एंड दिस इज ऑल्सो अ टोसाइल ग्रुप एंड दिस इज नथिंग बट अ मिसिलेट ग्रुप, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वाले यहाँ से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके इनको रिंग को क्लोज कर रहे हैं और बाद में हम इन ग्रुप्स को वो कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं अंडर द सेम कंडीशन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट? एक्चुअली फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का रोल आपका क्या होता है कि ये टोल्यूइन लेयर के अंदर से आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है ना, हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड भी हमको पता है कि इज एब्सोल्युटली नॉट सॉल्यूबल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अब अगर रिएक्शन को होना है, क्योंकि कंपाउंड नंबर 1 इज ऑर्गेनिक सॉल्यूबल, कंपाउंड नंबर 2 इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक मीडिया, मतलब दीज आर सॉल्यूबल इन टोल्यूइन, not in water. So lithium hydroxide is also soluble in water but not in toluene. So what do you want? If you want to abstract this particular proton from nitrogen, then obviously you need hydroxyl ion in organic media. So this इसका रोल हमारा ये reagent A करता है. What it does, it pulls the electron into the toluene layer in order to deprotonate compound number 2. इसका ये सिंपल रोल है, मतलब ये हमारा टोल्यूइन में आया, डीप्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करके दिस इज नथिंग बट अ मिसिल ग्रुप, ठीक है, उसको इसने रिप्लेस कर दिया. सो द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर ए. Okay, so now we are going to talk about the isoelectric point. Actually, isoelectric point हमारा होता क्या है, ठीक है. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा होता है कि इट्स अ पॉइंट और इट्स ऑल्सो कॉल्ड द आइसोआयनिक पॉइंट. इट इज नथिंग बट अ pH at which the amino acid they do not migrate in the electric field. So what does it mean? It is basically a pH in which the amino acid is non-neutral. जैसे कि this is a neutral form, right? और इसका मतलब आपकी ज्विटर आयन फॉर्म जो होगी वो आपकी डोमिनेट करती है at that particular point. So basically अगर हमको PI कैलकुलेट करना है अगर हमें, तो हमको कुछ नहीं करना होता, हमको एवरेज निकालनी होती है ऑफ पी केस दैट इन्वॉल्व द ज्विटर आयन. तो इसका हम डायरेक्टली हम केस कंसिडर कर लेते हैं जिससे हमारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी. लेट अस टॉक अबाउट द अमीनो एसिड इन विच यू हैव द न्यूट्रल साइड चेन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइसिन, एलिनिन और ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. तो अगर हम ग्लाइसिन यहाँ पर, लेट अस इमेजिन दिस एज अ ग्लाइसिन, सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यूट्रल फॉर्म. ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका एसिड का हाइड्रोजन अपना इसने ले लिया, ठीक है. अगर इसको मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं इसमें बेस डाल दूँ, मतलब इसकी हायर pH इंक्रीज कर दूँ, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बिकम डीप्रोटोनेटेड, राइट. सो दिस इज द फॉर्म दैट इज गोइंग टू प्रीडोमिनेट इन द बेसिक मीडिया. Whereas in the acidic media, we know that this is the form that is going to predominate. Now अगर हमको पता लगाना what is the PI of a particular amino acid which has a neutral side chain, then what we are going to do is PK plus इस PK की हम एवरेज निकाल लेंगे, मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज हाउ वी डू इट. लेट अस सपोज ग्लाइसिन के केस में PK हमारी क्या होती है 2.3 और PK2 9.6 होती है. सो दिस इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर द ग्लाइसिन के केस में. दिस इज गोइंग टू बी द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. इसका मतलब एट अ pH ऑफ 5.97 glycine is not going to migrate in an electric field because it will exist in a Zutter ion form. ये है उसका मतलब. Now let us look at the acidic and basic case. So obviously acidic के केस के अंदर क्या होगा हमारा, this is I'm straight away jumping into the example here. So here what we have is an aspartic acid. अगर हम इसका एसिडिक कर देंगे अगर हम, ठीक है, और लोअर pH के ऊपर चले जाएंगे तो दिस पर्टिकुलर एसिड इज गोइंग टू गेट प्रोटोनेटेड. तो यहाँ पर क्या था हमारा नेगेटिव में है, सो दिस इज गोइंग टू बिकम प्रोटोनेटेड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं pH हम डिक्रीज कर रहे हैं. लेट अस सपोज एक फर्दर हम इसको वो करेंगे, अगर हम इस वाली हम pH की बात करें, सो दिस इज बेसिकली न्यूट्रल फॉर्म. न्यूट्रल फॉर्म में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेयर दीज टू आर एग्जिस्टिंग एज ज्विटर आयन, whereas this particular acidic acid it is retaining its form. So that is why this is called the neutral form. और इसको अगर हम क्या करें, इसकी pH हम इंक्रीज करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बिकम डीप्रोटोनेटेड. और उसको हम फर्दर pH अगर हम इंक्रीज करके बेसिक साइड पे चले जाएंगे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू बिकम डीप्रोटोनेटेड. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द एमिनो एसिड विच हैव एन एसिडिक साइड चेन, ठीक है, जिनकी एसिडिक साइड चेन है, सो इसका मतलब ये है कि इनका जो PI है इट इज गोइंग टू लाई ऑन द एसिडिक साइड. तो अगर इस केस के अंदर अगर हमें PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, देन वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली pKa1 and this one pKa3. We are not going to consider this particular pK because ये already basic side में है, और इसके अंदर क्योंकि हमारा एसिडिक ग्रुप है, so it is these two
एसिडिक pHs which are going to count towards PI. So जब भी हम इसका कैलकुलेट करते हैं we are going to consider only 1.88 and 3.65. We are not going to calculate this one. So the PI in the case of aspartic acid is 2.77 या फिर कोई भी अगर दूसरा हमारा एसिडिक वाला होता, ठीक है. सिमिलरली बेसिक के अंदर भी यही होगा. बेसिक के अंदर there is a basic group that is attached, यहाँ पे हम हिस्टिडीन की बात कर रहे हैं. देन what we are going to talk about, इसके अंदर जो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा that is going to lie more towards the basic side. तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं PK2 and PK3. अगेन देख सकते हो आप एवरेज निकाल के 7.59. So in the case of when you have basic side chains on the amino acid, तब हमारा PI क्या होगा, it is going to lie more towards the basic side, or in other words we can say it is going to have the PI more than 7 अगर basic side chain होगी, और acidic होगी it is going to be less than 7. ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला कंसिडर नहीं कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए. नाउ हम क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था. So the question that was asked to us, they are saying that you want to purify a DNA binding protein जिसका PI 9 है, ठीक है. What they are saying, हमको प्यूरीफाई करना है एक बाइंडिंग प्रोटीन जिसका PI 9 है फ्रॉम अदर सेलुलर प्रोटीन जिनका PI 5.5 है. नाउ जो मैंने अब तक बात करी पिछली 1-2 स्लाइड्स के अंदर, उससे हम ये क्लियरली पता लगा सकते हैं कि जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली इट हैज़ बेसिक साइड चेन्स, ठीक है. और हमको उसको सेपरेट करना है उन प्रोटीन से जिनका यहाँ PI 5.5 है. इसका मतलब है कि हमें ऐसे प्रोटीन से सेपरेट करना है जिनकी साइड चेन क्या है, एसिडिक है, ठीक है. अब उन्होंने हमको बोला यू हैव द चॉइस ऑफ चूजिंग pH 9 एंड यू हैव द चॉइस ऑफ चूजिंग pH लो बफर. मतलब आपकी चॉइस है कि आप हायर बफर चूज करना चाहेंगे या लो बफर चूज करना चाहेंगे, ठीक है. और एनायन एक्सचेंज कॉलम, and they are clearly telling us actually कौन सा वाला कॉलम मतलब क्या होता है. they are telling that anion exchange columns are positively charged and cation exchange columns are negatively charged. So this is the information they are already giving us. So and these are the various options that are available, that which one you want to use it. Now let us look at what basically ion exchange chromatography, and here I'm talking about the anion exchange के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है. cation exchange उसका रिवर्स होगा. anion exchange में what you have is basically these column which have like immobilized cation surfaces. So इसका मतलब है कि अगर आपका mixture of amino acid होगा तो इसके ऊपर इन पॉजिटिवली चार्ज सर्फेसेस पे नेगेटिवली चार्ज दे आर गोइंग टू स्टिक टुगेदर, ऑब्वियसली जैसे यहाँ दिखाया गया है. एंड द पॉजिटिवली चार्ज आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड ईजीली. लेकिन हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं कि ऐसे DNA बाइंडिंग विच हैव बेसिक ग्रुप्स, ठीक है. अगर उनके बेसिक ग्रुप होंगे तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो सरफेस हो दैट शुड बी नथिंग बट दैट शुड बी नेगेटिवली चार्ज. सरफेस शुड बी नेगेटिवली चार्ज, ताकि पॉजिटिवली चार्ज जो भी ये हैं हमारे सेलुलर प्रोटीन दैट इज़ 5.5 जिनका PI है, दे आर गोइंग टू गेट इमोबिलाइज ऑन टू द सरफेस. तो हमको जो कॉलम यूज़ करना पड़ेगा वो यूज़ करना पड़ेगा कैटायन एक्सचेंज कॉलम, और उसका pH हमको हायर ही रखना पड़ेगा ताकि हमारे जो बेसिक ग्रुप है अमीनो एसिड है विद बेसिक ग्रुप दे कैन ईजीली कम डाउन और सेपरेट हो जाएं, ठीक है. और हमारे जो सेलुलर प्रोटीन है दे आर गोइंग टू गेट इमोबिलाइज बाय द सरफेस. आई थिंक कन्फ्यूजन अगर हो इस बारे में तो ज़रूर मुझे लिखिएगा, कोशिश करूँगा इस पर सेपरेटली वीडियो बनाने की. जस्ट बट डू लेट मी नो इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट. So the next question and last question that was asked basically was on the Haber process. So what they are saying, Haber process के बारे में सब बता रहे हैं. It's a reaction of hydrogen with ammonia, hydrogen with nitrogen to produce ammonia, catalyst भी बताया आयरन है. कौन सा statement true है? Actually the statement that is true वो ये वाला है हमारा, increasing the pressure increases the amount of ammonia formation, and this is as per the Lee-Chatler's principle, ठीक है. So that was about the TFIR exam asked in 2018. If you like the video, just comment on the video, share it with your friends, and if you have any confusion do comment. Okay, so thanks a lot for watching the video. Have a very good day. Bye.